सुनील सर खाली देतात म्हणे खाली भारत माता की जय तर म्हणा ठीक आहे नको हेलो के बारे में हम लोग आपको देने आए थे। कैसा है वहाँ पे कन्नड़ और इंग्लिश सिर्फ दो लैंग्वेज। ಇವರು ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶಾಪ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ। में पलक दिख रहा है तो उसके साथ आपको यहाँ की पॉपुलेशन जो मराठी है उनको सब्जेक्ट ये है रिक्वेस्ट टू यूज़ मराठी लैंग्वेज। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति करके, और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ रिक्वेस्ट टू यूज़ मराठी लैंग्वेज इन द मेन डिस्प्ले बोर्ड of the renovated central bus stand of the platform and on buses along with other languages. In continuation in English languages. As that are unreadable to the people in the surrounding places as measured by your office for implementation of Marathi language on buses and platforms which are violation of fundamental rights given by Indian Constitution. The Article 29 of Constitution of India provides that any section of the citizen residing in the territory of India as part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have right to conserve the same. As per census of 2011, Marathi speaking people are approximately 22% of the total population of Belgaum district. As per Government of Karnataka Language Act number 30 1981, an order was made dated 31 March 2004 by the Under Secretary of Government Department of Personal and Administrative Reforms behalf of Honorable Government of Karnataka for publication of important government order, notifications, rules, etc. in minority languages in addition to Kannada and English in the area where linguistic minorities constitute 15% or more of the local population in the state. Even the Commissioner of Linguistic Minorities of Government of India has given instruction rights of Marathi speaking people of Belgaum district various times, but till date no orders are implemented. As per order by Government of High Court in case number 149778 of 1995 dated 6 February 2001, the High Court ordered to the State Government of Karnataka Regional Commissioner and Deputy Commissioner of Belgaum Marathi in addition to Kannada and English. Recently, an interstate meeting was held on 4th of November 2022 in Kolhapur, Maharashtra, in presence of Honorable Governor of Meeting was held in presence of Chief Minister of Maharashtra and Karnataka, Honorable Central Home Minister of India. It was decided to safeguard the linguistic rights of minorities and the boards of the border area, which will be displayed in Marathi, Kannada and English to keep peace in the border area of Karnataka and Maharashtra borders area. Hence, therefore, by the way of this representation, we request you to display the Marathi language in the main building of bus platform and on buses along with Kannada and English. Lastly, we would like to conclude the memorandum requesting you to give us our linguistic rights as per Article 29. Minorities Commissioner ने जो हमको लेटर दिया है और हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो हिसाब से अगर ये नहीं हो सकता है तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फिर से रजिस्टर कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या है, हमको गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन जो सर्कुलर है डायरेक्शन विद इन स्टेट क्या है ओनली 2 लैंग्वेज, लोकल स्टेट का लैंग्वेज प्लस इंग्लिश का। हाँ सर, अगर हमारा हम लोगों ने मेंशन ಇವರು ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶಾಪ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ?
ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. इंग्लिश वो स्टेट का लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज क्रॉस नहीं कर सकते. आप दिया ना, हम फर्दर अथॉरिटी को भेजता है और अगर वो परमिशन दिया तो हम डालता है, नहीं तो हमारा क्या हमको गाइडेंस है वो गाइडेंस प्रकार चलता है. लेकिन पहले था सर, पहले मराठी बोर्ड में भी था. ऐसा नहीं कि ये कुछ नया डिमांड है. इससे पहले भी मराठी पे आपका जो भी बसेस थे इस पे मराठी था.